gone, surely gone, yes, absolutely plumb. First blood, Pakistan. What a beauty, full and straight. Oh, out, what a beauty. He's on absolute fire. They cannot play. Assalamu alaikum and hello to all cricket viewers. I'm back again, and this time around, after a wait of so many, I think, months, I'm back with my gang. I'm back with my analyst, which I'm told in every video. I must say that my cricket analyst will join when have Ibrahim from South Africa and our local boy from Karachi, that is Faris Kazmi. So without wasting target, I'll let you know about the agenda today. Is that what we are going to cover in the next 15 to 20 minutes. So basically, agenda is pretty simple. The hot topic, India and Pakistan Asia Cup, whether India will tour Pakistan to play Asia Cup, and correspondingly will Pakistan visit India for the World Cup. That's a hot topic nowadays. But it will be finalized, I think, in March. But EB will put the lights on that in short way. After that, we will follow PSL, which is again our league, and we will definitely discuss that. I also have a session with Faris like a couple of days back. And last but not least, we will do World Test Championship, the top 3 teams who have the most chance to qualify to play the final Lords. So, EB, coming towards the first question to you, Pakistan versus India, still a very debatable point. In between, a lot happens. PCB chairman change, then Nazim Shetty. We might perceive that it has a very good terms with Jesha and Indian board, but nevertheless, we haven't seen any positive response from India yet. So, your views as a neutral, in what direction it's going, and whether India come or Pakistan still will go and should go to play World Cup or not, as a neutral opinion. Over to you. First, assalamu alaikum to the viewers, and it's nice to be back. My view is that I think that first Nazim Shetty should look at with the members that are on the PC board what they got from the meeting with the ICC when England were touring Pakistan, in regards to when they questioned them about boycotting the World Cup. At that time, Ramiz Raja was the chairman, and then they should take a decision from there, because I think ICC will put a big fine on Pakistan in terms of boycotting the World Cup. So, because it's an ICC thing, and then they should separate it, and they should take up the Asia Cup situation with the Asian Cricket Council. So that from there to see what's happening there. And doesn't look like India's government is going to give them clearance to travel to Pakistan. So we'll have to see what happens. If they just separate India's games in UAE and the rest in Pakistan. Yeah, perfectly said. But then again, it will be a problem where to host the final. इसी सिनेरियो पे फारिज आपसे बात करूंगा, लोकल बॉयज हैं और बाकी लोगों को भी आने के लिए कि सिनेरियोस कुछ रेंज में, जिस तरह ईबी ने अभी बोला कि देयर इज अ चांस कि इंडिया के मैचेस यूएई में रखवा लें या पाकिस्तान, तो थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा अगर एक टूर्नामेंट एक कंट्री होस्ट नहीं कर रही, जो कि डिसाइडेड था, अगर ऐसा होता भी है। पहले तो थोड़ा व्यूअर्स को बताएं सिनेरियोस हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो ये हो सकता है, और विदाउट इंडक्शन पाकिस्तान भी वहां चला जाए, भारत अगर नहीं आता तो यूएई की क्या कंडीशंस है, थोड़ा सा इस पे हाईलाइट करें, फिर डिस्कस करते हैं थोड़ा इस पे और सिनेरियोस फर्स्ट। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूवर्स एंड लॉन्ग टाइम अगेन बैक ऑन कासिम चैनल, और हमारे चैनल भी इंशाल्लाह कासिम नजर आएंगे प्रेडिक्शंस देते हुए अपनी रिगार्डिंग पीएसएल नॉर्मल मैचेस। सो कासिम का सवाल ये था कि आगे के लिए कि पीएसएल एशिया कप के क्या सिनेरियो होने वाले हैं। भाई सबसे पहले तो सुनने में आ रहा है कि मार्च के एंड में डिसीजन लिया जाएगा कि पीएसएल आया कि एशिया कप आया कि पाकिस्तान में होना भी है या नहीं होना है, इससे फाइनलाइजेशन होगी। और दूसरा सिनेरियो देखें ये हो सकता है कि पाकिस्तान अपने सारे मैचेस कर ले, एशिया कप के सारी टीमें आ जाए और इंडिया बॉयकॉट कर दे। ये चीज थोड़ी कम होती भी नजर आ रही है हमें, लेकिन पीसीबी का स्टांस ये है, इंक्लूडिंग नजम सिटी, दैट दे माइट boycott India from the Asia Cup. If they don't come, they don't really care. So first is ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन ये कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस पूरा एशिया कप ही न्यूट्रल वेन्यू पर हो जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी 50 to 60% होती हुई नजर आ रही है। और थर्डली एक और ये चीज हो सकती है कि न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया के मैचेस हो जाए और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में ही हो, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपकी वाली बात है कि जो एशिया कप का जो वो है ना, एक मैचेस वो फीके पड़ जाएंगे। तो ये 3 सिनेरियो मैंने आपको बता दिए, ये तीनों हो सकते हैं कि इंडिया अपने मैचेस यूएई में खेल ले और फिर इंडिया यूएई में खेलने के बाद अगर फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल में मैच हो। ये 3 सिनेरियोज हैं जो कि मैंने डॉन न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट है अब्दुल गफ्फार, उनकी वीडियोस पे देख के मैंने ये इंफॉर्मेशन ली है इसके बारे में।
वेरी वेल सेट फ्रॉम फारिज। और लोकल बॉयज के लिए ये बताता रहा हूँ पाकिस्तानी व्यूज इन पर्टिकुलर, ये 3 सिनेरियोज फारिज ने बताया। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, होप फॉर द बेस्ट के भारत भी आए, अगर नहीं आता तो कम से कम एशिया कप में भारत होना चाहिए। के पाकिस्तानी सब ये चाहेंगे कि जितने भी प्लेइंग नेशन हैं होनी चाहिए, और उम्मीद करता हूँ भारत का भी यही होगा कि अच्छा, मैं गुप्ता का, उनके जो काफी अच्छे एनालिस्ट हैं, बड़ा पॉजिटिव बात करते हैं। उन्होंने भी कहा कि क्रिकेट विदाउट पाकिस्तान अच्छी नहीं होगा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जाता, तो इस पर भी बात करेंगे। इब्राहिम, कमिंग बैक टू यू, couple of days left with a PSL opener, and Multan Sultan will taking on Lahore Qalandars of the first encounter. So, how do you think? I believe you are supporting Islamabad United from the last couple of 3 seasons. With the, like, apart from that, which squad looks more balanced this time? I believe this year PSL is gonna like too much fun, because all squads are well balanced. The squads which are lacking somewhere, they have like full potential of the players, either batting side, bowling side, and now it believes it's a very well matched side. So after seeing all the 6 squads, whom do you consider a bit like edge on the rest of the 5 months? Edge, Quetta Gladiators and Salmi, because of they've got most of their overseas players available for a lot of the season. Other teams, these players are going away who they don't have replacements for. So it's going to be how they balance their local talent and use them more better if they're going to go further in the tournaments. So at the moment, I think Quetta and Salmi are ahead for the season. So will it be affected by Islamabad United team, your team? But I think top 4, but they have a few overseas, like Sterling is going away, Moin Ali is going away, and there's somebody else also. I think another 2, 3 who are not available. I Okay. think the all But rounders EB, are not available. you have said Moeen Ali, but they have picked a strong contender in the place of Rassim Anderson, who will be available. So, what are your thoughts on this? Dasan, yes. Dasan. Rasif Anderson could be coming back to SA as well for West Indies, for the West Indies series. Maybe the white ball, he might be given off for the Test series, and he might come back for 1 days and T20. So that will be in March. So then he won't be available for the playoffs. Okay. And if I'm not wrong, Bedson is not like in Lahore Qalandars. Yeah, Oh, that's right. Islamabad squad, I believe. Yes, I read that. Islamabad. Okay. Actually, he's a No fun. replacement. He is a replacement for the Moeen Ali, because Moeen Ali is also, not available in the PSL matches. That is why Islamabad have picked him in the short draft. That has happened. बिल्कुल ठीक हो गया। लोकल बॉय करा फारिस, थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा। बात तो आपसे पीएसएल में इंशाल्लाह होती रहेगी, अब हम एक्टिव हो गए हैं, और ये भी लाइक बीइंग ए न्यूट्रल हमेशा पीएसएल में आते हैं, काफी सपोर्ट करते हैं, इनकी प्रेडिक्शंस भी काफी स्पॉट ऑन होती हैं। फारिस, क्या स्क्वाड जो अभी ईबी से मैं बात कर रहा था, काफी ज्यादा इस टाइम वेल बैलेंस लग रहे हैं। कराची की बात करूं, लास्ट ईयर हमें डिफरेंट नजर आया, इस दफा थोड़ा सा उन्होंने भी काफी प्लेयर्स को इंक्लूड किया है। जलमी ने बाबर को लिया, और तो हर किसी ने अपने आप को जो वीक एरियाज थे, जो ग्रे पॉइंट्स थे, वो कवर करने की कोशिश की है। आप भी ईबी से सहमत हैं कि कोयटा ग्लैडियर्स और पेशावर जलमी लुक्स बेटर फॉर, या आपकी कोई अलग दो एक सेपरेट टीम्स हैं जिसको आप कहते हो कि ये टीम इस जगह पे इस मार्जिन पे दूसरे से थोड़ा सा ओवरहेड है? देखें, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी टैलेंट, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी राय है, कि कराची किंग्स इस दफा बाजी ले जा सकता है, क्योंकि कराची किंग्स में तीनों एक्सपीरियंस कैंपेनर्स खेलने हैं। मोहम्मद वसीम तो थे ही, लेकिन इनकी रिसेंटली जो है अभी इंक्लूजन हुआ है हैदर अली का और शोएब मलिक का, और सबसे बड़ी जो इंक्लूजन है उनके स्क्वाड में हुआ है मैथ्यू वेड की, जो कि आगे चल के बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं नॉकआउट मैचेस में स्पेशली। और उनका कोई ऐसा सीन नहीं है कि वो पार्शियली अवेलेबल हैं, वो फुली अवेलेबल हैं, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लग रहा है कि आगे चल के कराची किंग्स ऐसी टीम है इन दोनों टीमों के बाद, जो कि आगे चल के Matthew मसला is पैदा कर सकती है। fully available. He's not playing Yes, international anymore. yes. So I think Karachi has got a good chance to be in the at least in the playoffs. Although I will like maybe Zalmi or maybe Quetta to maybe reach the final, because they have got in terms of a balance very good squad. So I think these two teams can be reached in the finals. I readily agree with EB. Okay, maybe with the continuity of Faris' answer regarding Matthew Wade, like obviously from since 2021, the semi-final between Pakistan and Australia, I don't rate him a very good T20 player. To be really honest, like in that platform, I want to say that I don't consider him a very like superstar. I think all of us won't expect that innings which he hit like 360s to shine.
Do you think after that he has some charismatic personality and batting with the more of power and more approach because it's a big stage and Australia eventually win the final and after that Big Bash League few or other franchises picked him. Do you think there is a change in his approach of Matthew Wade or we will see him more aggressive in Karachi Kings squad as well, or it's like once in a blue moon it's a good innings then followed by people start picking like most of the happens in T20 for certain players plays a very good innings we will say that he should pick this franchise. So how do you rate a Matthew Wade as a T20 player? I think he's going to play aggressive. I just saw him playing the Wanderers on Monday live. He's the wicketkeeper for the Super Kings, Joburg Super Kings, and he came with that aggressive approach, and anytime they dragged the ball down, he was there with the scoop and he was sending it over fine leg. They had to put the fielders down around the third man and bring up long on and long off for him because he wasn't going straight, he was going square of the wicket and behind the wicket. And obviously it's harder for him to hit down the ground. He likes to hit square. So he was using his strengths, moving around the crease, aggressive approach. Even with his wicket keeping, he was chirping the players. He's not afraid, so he could be a good addition for the Karachi Kings this season. And do you think that we can see Shakil Khan with Matthew Wade as opener, or is Karachi Kings stick with number 4, number 5 of Wade? They can even push him down to a finisher, number 6, number 7. Okay. He can play the quick innings down there. ओके फारिस थोड़ा सा बाकी फ्रेंचाइज पे भी हाईलाइट अकॉर्डिंग करते हैं फिर मूव करते हैं चैंपियंस की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान उसमें आउट है लेकिन एबी से लेंगे कि टॉप 3 या टॉप 5 कौन बनती है और किसके कितने चांसेस हैं बिकॉज़ इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन इज एबी इज राइट ऑन टॉप और ही हैज डेफिनेटली सम डाटा। तो थोड़ा सा पीएसएल को रीकैप थोड़ा करते हैं फारिस, थोड़ा सा टिकटिंग पे तो आप भी कहेंगे कि पीसीबी ने थोड़ा सा पिंडी के साथ थोड़ा हार्श किया है टिकट की जो प्राइस है, नॉट सिर्फ पिंडी ओवरऑल में बात करूं तो पीएसएल इज लाइक पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है, खुल के सब जाते हैं खेलना, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर होगा। इससे फर्क पड़ेगा स्ट्रेंथ पे या लविंग नेशन है फिर भी आएंगे? नहीं कासिम, बिल्कुल पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक कंडीशंस तो पता ही है पाकिस्तान की, बीइंग एज अ वर्किंग क्लास यू कैन एग्री, तो काफी ज्यादा प्राइस हाई है। इवन के कराची के मैचेस, ऐसा नहीं कि पिंडी के मैचेस में सबसे ज्यादा पिंडी के मैचेस दिए हैं तो प्राइस भी वहाँ हाई है, यहाँ पे भी बहुत हाई है। मैं आपको बताऊं कि नॉर्मल जो इनक्लोजर होता है उसकी प्राइस प्रीमियम की क्लास की रखी गई है 1900 रुपए, 1900 रुपीज, विच इज अ क्वाइट हाई प्राइस। और इसके अलावा जो लोकल स्टैंड होते हैं, ईवी से भी मेरी बात हो रही थी, जो लोकल स्टैंड होते हैं उनकी प्राइस जो है तकरीबन 650 रुपए है, और अगर कराची और लाहौर का मैच है तो उसमें 1000 रुपए रख दी गई है, क्योंकि वहाँ मोस्टली गरीब लोग कह लें आप या लोअर मिडिल क्लास वाले लोग उस ऐसे वजह से बैठते, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हाई प्राइस रखी गई है। और फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि उस स्टेडियम में क्या लोग नहीं आ रहे। अगर आप इतनी ज्यादा हाई प्राइस रख देंगे तो लोग कहाँ से आएंगे? लेकिन आपकी वाली बात ठीक है कि पीएसएल है, तो पीएसएल के मैचेस में जो है लोग कहीं ना कहीं से करके आ जाएंगे, क्योंकि एज कम्पेयर टू टेस्ट और वनडे लोगों का इंटरेस्ट T20 में ज्यादा होता है। और कराची में भी जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें T20 में बहुत रश होता है, भले टिकट जितने का भी हो। तो ये सीन है। I do agree with you, completely agree. If we come towards you, World Test Championship, last time we have seen that it's like New Zealand have won that with quite ease. Now there are a few chances that India might take on Australia. And recently Australia is still ongoing. So how do you rate like top 3? If not top 3, you may rate the top 4 teams who are the strong contenders to be at the final spot, like in terms of few current scenarios and whatever the percentage you have calculated so far. Current scenario looks like India will win at least 3 test matches. So South Africa is the first team out of the equation because of they can't pass Australia. But in a situation, if the test series ends up with a 4-0 win for India and Sri Lanka can pull off a surprise 2-0 win against New Zealand, we'll have an India versus Sri Lanka final. So obviously it's in New Zealand, so it will be tough for Sri Lanka. Tough for Sri Lanka. Tough for Sri Lanka. End of season in New Zealand might have wickets that are a bit worn off. The wickets are a bit more on the slower side because of end of season, assisting more spinners. So Sri Lankan spinners could come into play and they could pull off a surprise like they did like 3 years ago in South Africa when they beat us 2-0 when they came here with the wickets playing a bit slower and assisting spin. So Sri Lanka could. Yeah, India, Australia. Australia just need to somehow win 1 test in the series and they in the final.
viewers वैसे ही channel In a match, or at least draw one test and then they safe. I totally agree, and more like 99% I think it will be mostly India versus Australia, which appear to be same. And like it's like a miracle if Sri Lanka beats New Zealand in New Zealand. Let's see what it happens. फारिस क्या कर रहा है भारत? भारत को भारत में हराना बहुत है, और ये नहीं कि टीम बुरी है, बीइंग पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कहेंगे जो अच्छा खेलेगा, लेकिन विकेट ऐसी बनाना, एक तो मैंने स्टार्ट में भी बात की एजेंडा में कि क्या डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है कि क्रिकेट 2 या 3 दिन में खत्म हो जाए, या भारत ने उसी विकेट पे 400 स्कोर किया, इंडिया मेड 400 विकेट एंड कपल ऑफ like 50s and century Rohit Sharma, and Australia like completely bamboozled in the first inning, and second innings they are like almost I think 100 odd some run they made, so it was a difficult wicket. Australia like टोटली क्लास बाय इंडिया. क्या कर रहा है भारत ऐसा जो कि उसको भारत में हराना बड़ा मुश्किल हो गया, विकेट से तैयार हो रहे हैं, वर्ल्ड कप भी वहीं पे, ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है. तो आप क्या इसमें देखते हैं कि पिचेस ऐसी बन रही हैं, या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अंडर प्रेशर है, या कहीं ना कहीं आईपीएल का चक्कर है? यार ये आईपीएल का चक्कर तो नहीं है, लेकिन ऐसा सीन है कि कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? या आई कैन हियर यू, गो ऑन. ओके, Yeah, I can hear you. सो सीन ये कि कासिम आईपीएल का चक्कर तो नहीं है, ये हमारा शुगल मेला चलता रहता है. बीइंग अ प्रोफेशनल इट्स जस्ट जोक. सीन ये कि देखें, एक तो एज अ पाकिस्तानी हमें उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने विकेट्स ऐसी बनाई हुई कि जो उनको सपोर्ट करी. सबसे पहले जो पाकिस्तान आप सीरीज में हारे हैं ना, आप कैप्टनसी को निकाल दें या प्लेयर्स को निकाल दें, सबसे पहले पाकिस्तान ये हारा है कि पाकिस्तान ने पिचेस अच्छी नहीं बनाई अपने उसमें जो इंग्लैंड आई, और दूसरा कि जो न्यूजीलैंड में थोड़ी बहुत बेहतरीन प्रेशर पड़ा, लेकिन जो इंग्लैंड सीरीज में हमने देखा बिल्कुल ही भट्टा पिचेस बना दी. और जहां तक हमने डीमेरिट पॉइंट की बात करी, बिल्कुल डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है. और आपने एक मजे की चीज और देखी होगी कि जो क्लिप वायरल हो रही है जडेजा वाली कि उन्होंने क्रीम लगाई और जो है वो उससे बॉल टेम्परिंग वाला ऐसा कोई सीन हुआ, तो डेफिनेटली इन चीजों में देखना चाहिए आईसीसी को. और उन्हें 25% मैच का बैन भी लगा दिया गया. बिल्कुल. अगर ये ऐसी पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की होती तो पाकिस्तान का प्लेयर तो कोई ना कोई बैन भी हो चुका होता अब तक, जो कि हमें थोड़ी बायसनेस नजर आती है टुवर्ड्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ही. लेकिन ये कि बात दबा दी गई है बस मैच की फीस की फाइन I think they've looked into the Jadeja match. Yes. They've looked into the matter, and it was Yes. cream. It was cream, and they just fined him for not informing the umpire that he was applying cream on his fingers and not giving the ball to the umpire. Even if he is applying Because cream, or in the right scenario, he should have given the ball to shouldn't the be allowed. umpire and then applied the cream. True, that's true. You shouldn't be allowed to do that, especially after the COVID protocols. Like you cannot, temper the ball with your saliva, etc. So you shouldn't be allowed to do it, even if you are applying cream to swing the ball. They say, well, they said according to ICC rules, they're allowed to put pain relief cream on their blasters if they've got sores on their hand while they're bowling. They're allowed to do that, but they have to inform the umpire first. Yes. In reality, every rule is, of ICC rule. If you give money to ICC from India, every rule is applied. So I will take that comment drastically. So I think money matters. Yeah. So ये सीन है कासिम के देखें शुगल मिला तो हो And गया. it looks suspicious because they didn't give the ball to the umpire. Exactly. So कासिम ये सीन है. आपने क्विकली मैं थोड़ा सवाल आपका समाप्त करूं तो बस यही है कि इंडिया प्लेड वेल, लेकिन ये कि इसी पिच पे ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से हमें बैम्बूजल हुआ हुआ नजर आया, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही जो है मतलब घुटने टेक दिए हमने. तो मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेली, लेकिन ये डीमेरिट पॉइंट वाली बात यहाँ अप्लाई हो सकती है. रिसेंटली जो है हमने ऑस्ट्रेलिया के में भी ग्राउंड था, उस ग्राउंड का मेरे नाम में भी जहन नहीं आ रहा, तो उनको भी डीमेरिट पॉइंट मिला. गाबा आई थिंक इट वाज, ये भी कैन कंफर्म. हाँ, तो गैबा को भी अगर डीमेरिट पॉइंट मिल सकता है तो व्हाई नॉट जो है वेन्यू एट विच इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर प्लेइंग. सो डेफिनेटली बिकॉज इट्स अ जो 3 टेस्ट मैच ended up playing in 3 days. What is the use of that? One team is scoring 400 because they are familiar of conditions, and the other one, can't cross over even 200 runs or even for 100 for that matter in the second inning. So I think इस पे थोड़ी बातचीत होनी चाहिए. और बाकी आपने पूछा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन खेलेगा. मुझे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो चांस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही नजर आ रहा है ऑब्वियस, क्योंकि साउथ अफ्रीका, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि आगे चल के क्या पता ऑस्ट्रेलिया दोनों मैचेस जीत ले. ये क्रिकेट है, फनी थिंग्स हैपन, और ऑस्ट्रेलिया की टीम कैसा एटीट्यूड है कुछ भी कर सकती है. Oh, rightly said by Faris. I think our joke about we should give full credit to India the way they are playing and all Indian viewers because they are playing outstanding cricket. Maybe same question to you. What different India is doing there at home yard, other teams are lacking. But I believe that Pakistan
at their home, best in the business, whether it's UAE or whether it's Pakistan, even we hardly lose the series. So what India is special, not specifically in Pakistan, talking in general, like India is playing exceptional cricket, no doubt about it. What different approach they are doing? Are they preparing the wicket upon their liking, or what you think as an analyst that they differ from the other countries and they're like whoever they go there as a guest coming over the losing side? So what's different? First part. Second part, what Faris mentioned that demerit point. Nevertheless, we have, but real beauty of test cricket if expand to like 4 to even 5 days. 2 test days, never a test day. To be very honest, I agree with Faris in that. So, question number one, part A: do you think India has something extra which is they are delivering and they're getting result? Part B: should demerit point allowed, or you are happy that until result is coming? I think first of all, the SG ball. That SG ball suits the Indian conditions very well. And the way they use their spinners, they got Ashwin and then one of either Akshar Patel or Jadeja, and sometimes they play all three. And they use Ashwin. He turns the ball quite a bit, even through the air and off if there's assistance off the pitch. Through the air, Akshar and Jadeja don't turn the ball much. So with Ashwin turning it so much that the opposition go into panic very quickly, and Jadeja and Akshar Patel benefit from that, and they trap them with a skidding ball, LBW, bold, or the one that just slightly turns and they're getting the outside edges. And then, so working with the spinners, Ashwin from one end and the other two from the other end, and they really, you've seen how many fifers Akshar Patel has taken in India. Jadeja taking so many fifers, but it's basically because of Ashwin spinning it so much. He takes wickets himself, but also the way that he's spinning it, he's playing mind games and creating a panic that they're thinking it's spinning so much when it's not spinning as much. And then they don't apply themselves properly, and then you see teams out for not even getting 200, not even getting 100. Whereas India batsmen just apply themselves, they know the conditions, and they score 350, 400. And also the teams have to take time to get used to that SG board. Like also going to England, you have to take time to get used to the Dukes board. Okay, demerit point should be allotted or not? Looking at the conditions, I think Australia, if they applied themselves better, could have. But I think the wicket was a bit of the way they prepared it, even they left it a bit drier in the areas where the spinners were going to bowl. So could. So coming to the final thought, up to the match referee. Well descriptive from my analysts, both Faris and Ibrahim. So final thought, Ibrahim, PSL winner. Who will be the PSL winner? The flat prediction. Winner. Too early. Quetta Gladiators. No, Faris. I think there could be a tie between Karachi Kings and Quetta. Okay, so me definitely supporting Gladiators this year, so I will definitely support and will want Quetta Gladiators to win. Let's see, PSL gonna interesting. We will all involve, as we'll see the last year, that our video frequency will also be high during PSL. So thank you so much, Faris. Thank you so much, Ibrahim. I have to go to Faris show as well after that. So thanks for time, guys. It was most awaited match, and I think we have to cover this, like these sessions on and off regular now, especially in PSL. So if not, we will listen to the prediction video in particular. What about South Africa League DV? That is washout or what? Haven't spoke on that. For today, it's postponed. They play tomorrow. SA time, 1:30 in the afternoon. So both me and Faris has prediction. For the reserve days tomorrow. Capitals as a winner. Let's see what happens tomorrow. So let's see Thank you guys. Thank you so much for joining the session, and we will keep seeing the same momentum until my next session. Take care. Allah Hafiz.